Now, we are going to start with chapter number 3, that is linear regression. Now, first of all, let's see how many marks it is there in your board exam. So, in your board exam, linear regression is 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 5, which is equal to 12 marks. So it is a 12-mark chapter, just like correlation, linear correlation, which is chapter number 2. Now, I'll just go back to chapter number 2 and revisit the concept of correlation. So this word, correlation, has this wonderful word relation in this. So basically, let's understand this first, that correlation में we are talking about a relation. Now, what is a relation? Relation means there is some connect. You agree with me? Relation यानी रिश्ता. So एक रिश्ता है ब्लड का रिश्ता, और एक रिश्ता है किसी को मिले, अच्छा लगा बात करने में, जैसे कि टीचर स्टूडेंट, फ्रेंड्स, ओके, ये ब्लड रिलेशन नहीं है, नेबर्स, दे आर नॉट ब्लड रिलेटिव, बट एक रिश्ता है, कनेक्ट है. सो रिलेशन इज अबाउट अ कनेक्ट बिटवीन टू डिफरेंट वेरिएबल्स. नाउ when we are given two variables, say x and y, so numbers are given to us, and using this chapter correlation, we have to establish a relationship between variable x and variable y, because they are mathematical numbers. So we have to use some formulas, and then we derive that yes, there is a relationship which can be positive relationship or it can be negative relationship. एक रिश्ता है जो पॉजिटिव है और एक रिश्ता है जो नेगेटिव है. Now what exactly it is? Say for example, relationship between price and demand. Price increases, demand decreases. So it is a negative relationship. Now let's understand, whenever there is a relationship between two variables x and y, it means any movement in x, any movement in x will result in moment in y. What sort of movement? Say for example, if x increases, y also increases, and if x decreases, y also decreases. So this is basically what type of relationship? Positive or negative? Positive. Positive. This type of relationship is a positive relationship, or we call it a positive correlation. ध्यान देना सब, please stay with me, please stay connected. Okay, now let's see a different situation, that now x increases, y decreases, x decreases, y increases. तुम देख सकते हो ये ऑपोजिट है और यहां पे डायरेक्ट है. एक गिरा तो दूसरा भी गिर गया. ओके, एक इंक्रीज हुआ तो दूसरा भी इंक्रीज हो गया. जनरली निफ्टी और सेंसेक्स इन स्टॉक मार्केट increases, so blue chip companies also increase. If Nifty and Sensex decrease, so blue chip companies also decrease generally. Okay, now
और यहाँ पे एक increase दूसरा decrease, x decreases, y increases. What type of relationship is this? Negative relationship. Negative relationship or inverse. Okay, when you were doing price and demand, it was inverse relationship. So negative relationship, or it is known as negative correlation. Now, this is what we did in this is what we did in chapter number 2. We established relationship between two variables x and y. अच्छा, ऐसा हो सकता है कि x इंक्रीज हुआ या x डिक्रीज हुआ. x इंक्रीज हुआ तो y को कोई फर्क नहीं पड़ा, x डिक्रीज हुआ तो भी y को कोई फर्क नहीं पड़ा. ऐसा पॉसिबिलिटी है? ऐसा पॉसिबिलिटी है? Yes. So that is what, then there is no relationship between those two variable. उनका कोई कनेक्ट है नहीं, रिश्ता ही नहीं है. जैसे हम रास्ते पे जा रहे हैं, बहुत लोग व्हीकल लेके घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, कार्स में जा रहे हैं, टू व्हीलर्स में जा रहे हैं, हम उनकी तरफ देखते भी नहीं, हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है. हाँ, पर कोई जाना पहचाना दिख गया तो लोग व्हीकल टर्न करके पीछे चले जाते हैं. या बन गया रिश्ता या रिश्ता बनाना है. तो all of you understood. I hope you are missing all these things in this lockdown situation. So basically, x and y, if any increase or decrease in x does not affect y, we say there is no correlation between both of them. So we have understood that is either positive or negative or no correlation. Now in positive, it may be perfect positive or partial positive. In negative, it may be perfect negative or partial negative. Okay, now we go to the next level after understanding this concept of correlation to regression. Now, what do we learn in this chapter, regression? This term regression was given by statistician Sir Francis Galton. ये सर टाइटल दिया था उनको. ओके, इसके लिए सर है, सर फ्रांसिस गैल्टन. कार्ल पियर्सन, हम सर कार्ल पियर्सन नहीं लिखते. यहाँ पे यू हैव टू राइट सर फ्रांसिस गैल्टन. ही इज द पर्सन हु गेव this concept of regression. Now let's understand this. There is a relationship between x and y. X is independent. X is independent and y is dependent on what? On x. यानी ये x है, वो अपनी मर्जी से चलता रहता है, उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो अपना व्हीकल लेके घूमता रहता है इधर उधर. पर जो y है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है. तो जहां x गया वहां y गया, आइदर सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन. सो x इज इंडिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट. प्लीज कीप दिस इन माइंड. समझ में आया सबको? When can I say they are that y is dependent on x? When there is some relationship between x and y. तो y जो है वो x के ऊपर डिपेंडेंट है. x is a factor which is independent, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे टाइम, टाइम इज इंडिपेंडेंट, वो अपने हिसाब से चलता ही रहता है. बट उसके ऊपर डिपेंडेंट है हमारा एज.
जैसे टाइम बढ़ता रहेगा हमारा एज बढ़ता रहेगा, और टाइम ऑलवेज मूव्स फॉरवर्ड, इट नेवर गोज बैकवर्ड। तो टाइम इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यू कैन से, उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। अनदर एग्जांपल आई कैन गिव इज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। Advertisement expense of the company is independent, but sales is dependent on advertisement. Summertime, it's a summertime, and you will see that lots of soft drink advertisements come on television, because this is the time. You will see, you open newspaper, you will find lots of advertisement of ice cream. Amul hai, Havmor hai, Vadilal hai, toot padte hai. They give photographs so that you see that photograph and you are tempted to eat. That is a very interesting thing, that how Domino's increase their sales. What they used to do is, every as weekend progresses, they will come to your society and put a leaflet on the door of your house. It will put a leaflet in the newspaper. जैसे न्यूज़पेपर खोला, एक कलरफुल लीफलेट गिरा, जैसे वो कलरफुल लीफलेट गिरा, हमने देखा उसमें पिज्जा, और देख के ही मुंह ललचा गया, पिज्जा, चलो ऊपर पिज्जा खा लो। तो दिस इज व्हाट दे डू। तो ये सब लोग एडवर्टाइजमेंट करके दे ल्यूर कस्टमर्स, कस्टमर्स को ल्यूर करते यानी ललचाते हैं कि आओ हमें बाय करो, हमें बाय करो, हमें बाय करो। है कि नहीं? है कि नहीं? तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इंडिपेंडेंट है, पर उसके ऊपर डिपेंडेंट है सेल्स। अंडरस्टूड व्हाट इज एक्स एंड वाई नाउ? ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, चलो बहुत बढ़िया। नाउ यहां पे एक्स और वाई में तो रिश्ता है, एक्स और वाई में तो रिश्ता है, पर वो रिश्ता क्या काम का स्टैट्स में? In statistics, we have lots of historical data. What is historical data? Past में जो हो गया है उसका सारा इंफॉर्मेशन है हमारे पास, हमें पता भी है x और y कनेक्टेड है एक दूसरे से, पर हमें क्या फायदा हुआ उससे? उनका रिश्ता है तो है, पर मुझे क्या फायदा? स्टूडेंट्स, चलो ध्यान दो, वेरी प्रैक्टिकल लाइफ, स्टूडेंट्स और सोशल मीडिया का रिश्ता है कि नहीं है? का रिश्ता है कि नहीं है? तो स्टूडेंट और सोशल मीडिया का जो रिश्ता है, मेरे पास डेटा है कि x सोशल मीडिया एंड y नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ व्हाट एज ग्रुप कमिंग ऑन दैट सोशल मीडिया। तो अब मेरे पास वो इंफॉर्मेशन है, पर मैं इंफॉर्मेशन का क्या करूंगा? मैं वो इंफॉर्मेशन को यूज करूंगा एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, फोरकास्टिंग करने के लिए, मार्केटिंग प्लान बनाने के लिए। दैट इज वेयर दिस रिग्रेशन कम्स इनटू द पिक्चर, दैट एक्स एंड वाई आर डिपेंडेंट। सो नाउ यूजिंग सम फॉर्मूला आई वांट टू फाइंड आउट, पे अटेंशन मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ मी, कि हमें अब यहां पे क्या देखना है। इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज नोन, कि ये अगर एक्स इतना है, अगर मैं अपना एडवर्टाइजमेंट एक प्लेटफॉर्म पे करता हूं लाइक इंस्टाग्राम, तो मेरा स्टूडेंट्स का व्यूइंग कितना बढ़ेगा वो मैं एक एस्टिमेट करूंगा। अगर मैं इसको कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेके जाता हूं तो कितना बढ़ेगा। तो यहाँ पे वो डेटा को मैं यूज करता हूँ, एनालाइज करता हूँ और प्रेडिक्ट करता हूँ। मेरा एडवर्टाइजमेंट है 10 करोड़, 15 करोड़, 8 करोड़, 7 करोड़, उसके हिसाब से मेरा सेल्स है। तो लास्ट 4 ईयर का इंफॉर्मेशन है मेरे पास, पर ये साल मुझे प्लान करना है कि अब मैं कितना खर्चा करूंगा। इन दोनों का रिश्ता तो है ही कि एडवर्टाइजमेंट बढ़ता है तो सेल्स भी बढ़ता है। तो मैं ऐसा अलग अलग ऑप्शन देखूंगा कि अगर मेरा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 10 करोड़ है तो कितना सेल्स एक्सपेक्टेड है, 11 करोड़ है तो कितना एक्सपेक्टेड है,
20 करोड़ है तो कितना एक्सपेक्टेड है। तो अब हम कुछ मीनिंगफुल यूज करेंगे डेटा का। अंडरस्टूड दिस? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? So that is where we have this chapter regression, जहां पे using this information, the relationship between x and y, we will now predict, मैं लिखता हूं predict, we will now forecast what, that if x is so much, what will be the value of y, if x is so much, what will be the value of y. Now a question comes to my mind and maybe to your mind कि sir, what if x is dependent on y? ऐसा भी पॉसिबल है ना, ऐसा भी पॉसिबल है ना कि x y पे डिपेंडेंट है और y x पे डिपेंडेंट है, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि नहीं? As population increases, sale of mobile phone increases. As mobile phones manufacturing increases, more people using mobile phone increases. So यहाँ पे अलग अलग टाइप का ऐसा भी हो सकता है कि x is dependent on y and y is dependent on x. Sale of vehicle and sale of fuel. व्हीकल का व्हीकल का सेल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली फ्यूल का सेल बढ़ेगा। फ्यूल का सेल बढ़ रहा है तो ऐसा भी इंडिकेशन आ सकता है कि व्हीकल का भी सेल्स बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं दोनों में कोरिलेशन है, पर हमारे सिलेबस में सिर्फ y on x ही है कि y is dependent on x. So we are going to see only that part of regression where y is dependent on x. We are not going to see interdependent variables or reverse variables. Got it, all of you? Now, what was the first method of finding correlation? Can anyone tell Half me? ESP, Sorry. scatter diagram. Scatter diagram was the first method of finding correlation. Now, what happens over here? Dhyan dena, please. When we go for scatter diagram, method 1, which is also there in the chapter regression, now if it is perfect positive, it is perfect negative, life is very easy. But what if I have a diagram like this, a graph with variable x and variable y, and when I plot values of x and y, there are no clear indication that it is perfect positive or perfect negative. So in that case, if I want to estimate what challenges I face, please dhyan do sab, please dhyan do sab. यहाँ पे if someone says that connect the dots, tell me कौन सा लाइन हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे प्रेडिक्ट करने के लिए, तो one person may draw a line like this, someone else में से कि नहीं नहीं ये लाइन सही नहीं है, तुमने ज्यादा डॉट्स कनेक्ट नहीं किए, मेरे हिसाब से ये लाइन सही है। कोई तीसरा आ गया सबसे अलग, सबसे निराला, उसने कहा नहीं नहीं ये दोनों तो गलत है, इनको क्या पता चलता है, उनको ठीक से डॉट्स भी नहीं दिखते, चश्मे लगाए नहीं है उन्होंने, चश्मे लगा लेते। ओके, अब तीसरा, अब देखो यहां पे हो गया प्रॉब्लम कि तीन तीन लाइन आ गया। यू अग्री विथ मी? तो इसमें से कौन सा लाइन सही है वो कैसे पता चलेगा? ध्यान दो, प्लीज स्टे कनेक्टेड, प्लीज स्टे कनेक्टेड, बाद में करना ये सब। नाउ अगर मुझे एस्टिमेट करना है, प्रेडिक्ट करना है, लेट से x का वैल्यू दिया है, दिस इज व्हाट वी नो, ओके, आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो मैं x से ऐसा लाइन ड्रॉ करूंगा, स्ट्रेट जाऊंगा, यहां से y एक्सिस पे चला जाऊंगा, से मुझे एक वैल्यू मिला y1,
ओके, एक एस्टिमेट। कैप यानी एस्टिमेट। वाई के ऊपर ये जो टोपी लगाया ना आपने, गर्मी बहुत है, टोपी पहन लो, नहीं तो सर फट जाएगा, तो ये जो कैप है दैट इज एस्टिमेट। ओके, देन एक ये जो लाइन है, जिसने भी ये लाइन दिया उसके हिसाब से y1 आया। फिर दूसरे ने बोला नहीं नहीं ये लाइन तो तेरा गलत है, तो ये y1 गलत है, तो दूसरे ने आया, उसने बोला ये वाला लाइन लेते, बीच वाला, वो सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे हमें मिला y cap 2। फिर तीसरा आया कि नहीं नहीं तुम दोनों का एस्टिमेट ही गलत है, तुम लोग नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आज इंडिया कितना रन्स करेगा, क्योंकि तुमने सही लाइन नहीं चुना है। आज विराट कोहली कितने रन्स मारेगा वो तुम्हारा एस्टिमेट गलत है, क्योंकि ये दोनों लाइन गलत है। तो तीसरा लेते हैं, आज ये स्टूडेंट इतने मार्क्स लाएगा ये एग्जाम में, गलत है, तो ये वाला लाइन मेरा वाला सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे तीसरा आ गया y cap 3। अब तुम्हारे पास x का वैल्यू था, उससे तुमने फाइंड किया कि ग्राफ यूज करके, तो तुम्हारे पास 3 एस्टिमेट है। नाउ टेल मी, क्या तीनों के तीनों हम ले सकते कि कोई भी एक ही लेना पड़ेगा हमें? कोई एक लेना है, पर यहाँ पे कौन सा बेस्ट एस्टिमेट प्रोवाइड करेगा, कौन सा लाइन? कैन एनीवन टेल मी कौन सा लाइन बेस्ट एस्टिमेट प्रोवाइड करेगा? लाइन ए, लाइन बी या लाइन सी? सी। सब अग्री कर रहे हैं सी के साथ? बी। बी। और कोई? बी। बी। सी, यहाँ पे हम इसका आंसर ही नहीं दे पाएंगे बच्चों, बिकॉज हमें कैसा पता चलेगा कि ये बेस्ट है? ये तो हमारा इंडिकेशन है, हमारा एक जजमेंट है, एक विजुअल देख के हम अंदाजा लगा रहे हैं, पर हो सकता है कि तुम्हारा एस्टिमेट के ऊपर करोड़ों रुपए लगे हो। तो तुम एस्टिमेट हो सके उतना एक्यूरेट करने की कोशिश करोगे। तुम्हारे बिजनेस में अगर तुम बिजनेस करते हो और तुम्हारे नेक्स्ट ईयर का एडवर्टाइजमेंट का खर्चे का प्लानिंग हो रहा है, तो तुम्हें एक्यूरेट और नियर टू एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए, फोरकास्टिंग चाहिए। यस और नो? यस। हम कोई नुकसान करने के लिए तो धंधा नहीं कर रहे, हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हम ये सब सब्जेक्ट्स इसके लिए पढ़ रहे हैं कि ताकि हमारे में वो इंटेलेक्ट आए कि हमें कैसे सब चीज को एनालाइज करना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं। तो यहाँ पे यूजिंग द मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम we cannot say anything, and this becomes a limitation of scatter diagram. So now we go for the next method, that is method number 2. It is known as method of least square. Now I will take a breather, so I'll take a moment and of I'll take a moment off, and you please write all these important things. Then we go for the method of least square. थोड़ा मैं breather सांस ले लेता हूँ और तुम भी ये सब लिख लो। तुमने तुम्हारी रियल लाइफ में कभी रिग्रेशन का एक्सपीरियंस किया है? से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा रिजल्ट आया और तुम स्कूल गए रिजल्ट लेने, और तुम्हारे साथ तुम्हारी मम्मी आई, और रिजल्ट बहुत ही खराब आया क्योंकि ऑफलाइन था तब। और फिर तुम घर गए और तुमने देखा कि आज तो पप्पा का मूड जबरदस्त खराब है, तो क्या तुम वो रिपोर्ट कार्ड दिखाओगे? ऐसा होगा नहीं। पर तुमने देखा पप्पा का मूड बहुत अच्छा है, बहुत फॉर्म में आज, कि मेरी प्यारी बेटी, मेरा प्यारा बच्चा, ओ कैसा रहा बच्चा, रिजल्ट क्या आया? तो क्या करोगे? ऑब्वियसली यू विल शो द रिजल्ट। कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। तो तुम मूड देख के पेरेंट्स से बात करोगे या कभी भी बक दोगे कि मना पाई दो? Now, obviously, okay, same for me.
तो ये सब सब्जेक्ट्स है ना, ये हमारे रियल लाइफ से भी कनेक्टेड है, क्योंकि हमारा रिश्ता है हमारे पेरेंट्स के साथ। तो हम वो देखते हैं कि उनका आज मूड कैसा है, हमारा कनेक्ट है उसके साथ। तो मूड देख के, अगर मूड खराब है तो कुछ ना मांगना, अच्छी अच्छी बातें करना। और मूड अच्छा है तो बस आओ लूट लो, बैंक सामने ही बैठा है। So this is what, see, you have to like really learn the subjects, understand them, see how it is connected with your life. So you will enjoy studying these subjects. कॉमर्स का ये तुम्हारा लाइक बिगनिंग है, तो ऐसे ही तुम्हें हर एक सब्जेक्ट को अप्रोच करना है। नाउ इफ यू आर डूइंग बिजनेस, तो इन बिजनेस यू हैव टू टेक hundreds of decisions. If you are doing a job, you are given so much responsibility, so you have to take lots of decisions. So you will always analyze the situation, see what can be the outcome of your action, and take decisions. So, some way, these are all connected things. Now, over here, let's come back to the topic. Now, over here, scatter diagram becomes a very difficult model for us to estimate or predict because of their inherent limitation, that we don't know A is best or B is best or C is best. So, what we need to do is we have to go for some formula. Now, the formula is known as method of least square, where we have to find what? ध्यान देना please. We have to find line of best fit. Line of best fit. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो डॉट्स है उनको कनेक्ट करता हुआ वो कौन सा लाइन है जिसके ऊपर हम एस्टिमेट करेंगे. But here it is a mathematical model of finding the estimates or prediction. So we first write that model, which is very important. It can come in your exam, that is linear regression model. This can come in your exam for 1 mark. What is a linear regression model? It is y is equal to alpha plus beta x plus mu. Now, what is this? Very important. Alpha and beta, these are constants. X is independent variable. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी मर्जी से अपने मूड से चलता है, इंडिपेंडेंट है. और y इज डिपेंडेंट. Variable. What about mu? Mu is a disturbance variable. This you have to learn. This can come in your exam for 1 mark or even maybe 2 mark. Okay. So this is a linear regression model, a mathematical model. Based on this, we get a formula. ध्यान देना please. Y cap is equal to A plus BX. Acha, this where it is given in textbook, it is given on page number 117. Okay. Now, we get this equation y cap is equal to A plus bx, where A and B are constants. And as you see the equation, कि ये जो x है, it is independent
एंड ये जो y है दिस इज डिपेंडेंट, and that is why it is known as y is dependent on x. We can write y. I hope you all are writing this. Y is dependent on x. You can yourself see that as the value of x will change, y will also change. Now, why have we given this cap to y? Because here we are estimating, we are predicting, we are forecasting. So it is not actual, it's a estimate कि आज विराट कोहली इतने रन्स करेगा, अगर मैं इतना एक्सपेंस करूंगा तो मेरा इतना सेल्स होगा, हुआ नहीं है, होगा, वो उतना हो भी सकता है, उससे ज्यादा या उससे कम भी हो सकता है. अग्री? अग्री? तो यहां पे ये हमारा मोस्ट यहां पे ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा इस चैप्टर का. हर एक सम में वी हैव टू यूज this formula, y cap is equal to a plus bx. Now first step, as we all know that first step is we always find mean. So here also we have to find x bar and y bar. That's the first step. Now how do we find x bar? X bar is equal to sigma xi upon n, and y bar is equal to sigma yi upon n. Now, the condition is, first condition, if x bar, y bar are integers, if x bar and y bar are integers, in this case, it means they are not in fraction. Then we will be using different formula over here. Dhyan dena please. Now, over here, x is independent, y is dependent, but a and b are constant. So here in this formula, we have to find the value of b, and value of a. If we know the value of b and value of a, x is a independent variable, x का information इधर डालो और y का information find करो. X is the input, y is the output. You understood this? A and b क्या है? A Yes, sir. and b are constant. So if we know the value of a and b, x का value कुछ भी होगा, y का value मिल जाएगा. Agree? Now, ध्यान दो. First, we have to find out by on x. Now, why I'm writing like this? Because ये जो b है, वो है for formula where y is dependent on x. So we write it this way: b is equal to by on x, which is equal to कोरिलेशन का पहला फॉर्मूला का न्यूमरेटर क्या था? कोरिलेशन का पहला फॉर्मूला का न्यूमरेटर यानी ऊपर, वो लाइन के ऊपर क्या था? Sigma xi minus x bar into xi minus x bar into yi minus y bar. याद आया सबको? अपॉन क्या करना है? ध्यान दो, ये है y on x. कौन ऊपर कौन नीचे? y ऊपर है या नीचे है? y on x. So what is first, y और x? ऊपर कौन है? y और नीचे कौन है? x. तो यहाँ पे भी नीचे आ जाएगा सिग्मा x माइनस x बार द होल स्क्वायर. नो अंडर रूट. हेलो 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 हेलो. नो अंडर रूट. इज दिस क्लियर?
So this becomes your first formula. Please write it down along with me now. Now, now, लिखते लिखते सुनो. Now, B तो मिल गया हमें ये फॉर्मूला यूज करके. अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए A. सो A के लिए क्या करेंगे? ध्यान दो, इक्वेशन है हमारा यहां पे, प्लीज एक ही मिनट. y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. तो अब मैं क्या करूंगा? y को कर दूंगा y बार, a प्लस बी एक्स को कर दूंगा x बार. तो अब मुझे अगर a फाइंड करना है तो b इंटू एक्स बार को मैं ये साइड ले जाऊंगा तो हो जाएगा नेगेटिव. सो a इज इक्वल टू y बार माइनस बी एक्स बार. तो b जो हमने फाइंड किया वो यहाँ पे आ जाएगा. x बार और y बार का वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड किया है और मिल जाएगा वैल्यू ऑफ a. इज दिस क्लियर? In regression, it is compulsory for us to find out x bar and y bar. Got it, all of you? Any doubt? Okay, good. Please write this. Now, illustration 3. In order to study the relationship between the repairing time of accident damaged cars and cost of repair, the following information is collected. Repairing time of a car man hour X and repairing cost thousands in thousand rupees Y. Now in regression, my dear students, please stay connected. ध्यान दो, here you have to be very careful regarding these units given over here. Okay, because it may affect your answer significantly and you may go wrong. So be careful that what are these units given over here. Because you can see over here 25 is given, but it is actually not 25 rupees. It is 25,000. This 32 is man hours. So be careful about these units. They can really change the answer if you have not understood this properly. Now, obtain a regression line of y on x. Now tell me what is dependent and what is independent. Okay, tell me what is independent. Man One which is not dependent on another. What is independent? Independent क्या है? Y है या X है? X. Sorry? X is an से X है. Very good. तो यहाँ पे independent is X, time is independent and Y is dependent. That's why it is given Y on X. Okay, you will get used to this language. Okay, once you do 3-4 sums. If the time taken to repair a car is 50 hours, find an estimate of its repairing cost. अब ये जो डेटा है, जैसे मैंने मेरे प्रीवियस यानी मेरे अभी के अर्लियर पार्ट ऑफ द लेक्चर में कहा था कि इट्स अ हिस्टोरिकल डेटा. हिस्टोरिकल डेटा यानी ये पहले हो चुका है, तभी हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि 43 आवर्स का रिपेयरिंग टाइम है तो 46,000 का खर्चा है. पर अब मुझे एस्टिमेट करना है कि अगर 50 hours I will spend, so what will be the estimate of my repairing cost? So you can see this important word estimate because ये फ्यूचर में होने वाला है. समझ में आया सबको? So यहाँ पे let's first write the values. As a normal sum we have to do, nothing to worry. Calculation is very simple. We write x, we write y, we write the values 32, 40, 25, 29, 35, 43, 25, 35, 18, 22, 28, 46. Always check the question कि बराबर लिखा है कि नहीं. Even in your paper, okay, be careful. Okay, now
First step is we have to find the mean. So we have to do the total 204, 174. Now, let's first find out mean. So these are the totals. X bar is equal to sigma xi upon n, which is 204 upon n, 1, 2, 3, 4, 34, which is equal to how much is mean? 34, Okay. Then y bar is equal to sigma yi upon n, which is 174 upon 6, which is 29. So now you know there are integers, no fractions involved. So we will go for formula x minus x bar, y minus y bar 1. So now over here, first formula is x minus x bar, that is 34. Next formula is y minus y bar, that is 29. A formula after that is x minus x bar in the bracket y minus y bar. Now, let's start doing this. X is 32 minus 34 is minus 2. 40 minus 34 is 6. 25 minus 34 is equal to minus 9. 29 minus 34 is minus 5. 35 minus 34 is 1. 43 minus 34 is 9. Now, this total should always be equal to 0. Be careful. Okay, it's a check. Ki sum of deviation of observations from the mean is always equal to 0. Now, y minus 29, that is 25 minus 29 minus 4, 35 minus 29 is 6, 18 minus 29 is minus 11, 22 minus 29 is minus 7, 28 minus 29 is minus 1, and 46 minus 29 is equal to 17. Total always check should be equal to 0. It's a check. We don't have to use it in the formula. Now x minus x bar, y minus y bar. 8. Be careful about signs over here. Okay, just like this one. Here it is 1 into minus 1. So it will be minus 1. So please be careful. And then the total 330. Now, we generally find x minus x bar the whole square and y minus y bar the whole square. But we don't need over here
y minus y bar the whole square. So we have to just find x minus x bar the whole square. So let's do it. X minus x bar, that is minus 2 square is 4, 36, 81, 25, 181, and the total 228. Good. 228. Now, we have all the numbers what we want. Now, let's first write our regression model. So let me write over here. Regression line of y on x is y cap is equal to a plus bx. This is our base equation. You all must remember this. It's a linear equation. Now, first step is we have to find b, which is equal to by on x, which is equal to sigma x minus x bar y minus y bar upon sigma x minus x bar the whole square. ध्यान दो प्लीज बच्चों, प्लीज ध्यान दो. Now we are used to correlation so much that many times by mistake we put under root. It will be wrong. Be careful. यहाँ पे there is no under root, तो under root लगाना नहीं है. Please be careful, otherwise your answer will go wrong. Got it? So remember this, regression में अंडर रूट आता नहीं है b के फॉर्मूला में. Now b is equal to 330 upon 228, which is equal to 1.447. So we will 1.4. 0.45. अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो ध्यान दो एक बार स्क्रीन पे. On calculator we got 1.44736, but we have to go only up to 2 decimal place. So 1.4 और ये 4 के बाद 7 है तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 5. अगर ये 2 होता तो 1.44 ही रहता. So that's how we round off. So b is equal to 1.45. So first task accomplished. We found the value of b. Now we have to find the value of a. So a is equal to, let me change the color. Okay. So a is equal to y bar minus b x bar. ये फॉर्मूला कैसे आया? ये जो x है उसको x बार कर दिया और ये कंप्लीट बी एक्स बार को ये साइड ले गए लेफ्ट हैंड साइड, तो बन गया फॉर्मूला y बार माइनस बी एक्स बार. तो योर a इज इक्वल टू y बार जो हमने फाइंड किया था 29 minus, always write in the bracket 1.4, because many times b also becomes negative. When they are negatively correlated, b can be negative also, b can be positive also. So be careful. That's why always write in bracket. These are small things you need to take care to avoid silly mistakes. So 1.45 into what is x bar? 34. So which is equal to 29 minus 49.3, which is equal to
negative 20.3. Please be careful. A aa gaya negative. Now we write the regression line. So therefore, regression line of y on x is y cap is equal to a, which is minus 20.3. b का वैल्यू पॉजिटिव है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस 1.45x. First part of the answer we got it. Now this is not over because we have to yet estimate. अभी estimate करना बाकी है. Look at this line, find an estimate. So over here we take putting x is equal to, क्या estimate करना है? If the time taken to repair the car is 50 hours, so taking x is equal to 50, y cap is equal to minus 20.3 plus, always in the bracket, 1.45 into 50, which is equal to minus 20.3 plus 1.45 into 50, 72.5. Therefore, y cap is equal to 52.2. So therefore, when repairing time is 50 hours, estimated, ये जो कैप है वो estimate है, estimated cost is equal to rupees 52.2, in bracket or together you write 1000. This is important. If you just write rupees 52.2, it is wrong because ये 52.2 rupees नहीं है, ये है 52.2 which is what? Which is rupees 52,200. This is 52,200. It is not 52. That's why, my dear students, I said this is very important over here. This 1000 लिखा हुआ जो है वो बहुत important है. Got it, all of you? All of you understood the process of the sum? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt in this? No, sir.